फिर उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे. Look here, your attention बेटे. First of all, teacher is going to clear four things. Distance, your attention. I am going to make you clear the difference between distance, displacement, speed, velocity. Four things we are going to clear. शाबाश, सभी बच्चे नोट कर लें फटाफट से. और ये होते क्या हैं, उनसे पहले इनका यूनिट देखते हैं हम. यूनिट, इसको इंटरनेशनली किस यूनिट में मापते हैं? डिस्टेंस को मीटर में. डिस्प्लेसमेंट को किस में मापते हैं? मीटर में. स्पीड को किस में मापते हैं बच्चे? मीटर पर सेकंड में. मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी को किस में मापते हैं? मीटर पर सेकंड. सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए. दूसरा पॉइंट, शाबाश, आपको इनके सिंबल्स भी याद होने चाहिए. अगर मैंने मीटर को लिखना है तो कैसे लिखूंगा बेटे? मीटर का सिंबल एम, स्मॉल एम. मीटर का सिंबल स्मॉल एम. मीटर पर सेकंड का सिंबल एम एस -1. और मीटर पर सेकंड का सिंबल ये भी हो सकता है M/S. सभी बच्चे नोट कर लें. अब हम देखते हैं कि इनका मतलब क्या है. योर अटेंशन. सपोज बेटे, दिस इज योर होम. दिस इज योर होम. ये आपका घर है. ओके. एंड दिस इज योर स्कूल बिल्डिंग. दिस इज योर स्कूल बिल्डिंग. स्कूल. और ये आपके स्कूल का एंट्री पॉइंट है. और यहां से आपका घर है. अब ध्यान से सुनना. मान लीजिए आप किसी दिन घर से स्कूल जा रहे हैं और आपको ये येलो कलर वाला रास्ता फॉलो करना पड़ता है. इस रास्ते से आप स्कूल पहुंचते हो, आइदर बाय साइकिल और बाय बस, वॉट एवर. ओके. तो ये जो येलो असली रास्ते की लंबाई है ना बेटे, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस. क्या बोलते हैं? डिस्टेंस. यानी बच्चा बोलेगा, सर जो बॉडी मोशन में है, मान लीजिए मैं घर से चला, स्कूल पहुंचा इस रास्ते से, तो कितना लंबा मेरे को रास्ता फॉलो करना पड़ेगा स्कूल पहुंचने के लिए, उसको डिस्टेंस बोलूंगा. बिल्कुल सही. बच्चा मेरे से पूछेगा, सर जब मैं वापिस आऊंगा स्कूल से घर, तब भी मैं इसी रास्ते से आऊंगा, उसको भी डिस्टेंस कह सकते हैं. बिल्कुल. चाहे स्कूल से घर का डिस्टेंस दूरी माप लो, चाहे घर से स्कूल की दूरी माप, दोनों में से कोई भी दूरी मान लो, उसको डिस्टेंस बोलेंगे. ओके. तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या बना? मीटर में इसको नॉन मेजर करते हैं. डिस्टेंस का डेफिनेशन सभी बच्चे लिखें. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल ट्रैक फॉलोड. लेंथ ऑफ एक्चुअल ट्रैक फॉलोड किसके द्वारा? बाय मूविंग बॉडी. बाय मूविंग बॉडी. कहां से कहां तक बेटे? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट. जैसे घर से चला तो घर को इनिशियल मैंने स्टार्टिंग भी होता है. फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू स्टार्टिंग पॉइंट. टू स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी फाइनल पॉइंट, टू फाइनल पॉइंट. अब एक बच्चा बोलता है मेरे को, सर अभी अभी तो आप बोल रहे थे
कि चाहे आप स्कूल से घर माप लो तो भी यही है, टू फाइनल पॉइंट, तो मैं साथ में लिख देता हूं। और वाइस वर्सा, आप उल्टा भी माप सकते हो। समझ गए? सभी बच्चों को ने फिगर बना लिया होगा उम्मीद करता हूं। चाहे घर से स्कूल की दूरी माप लो, स्कूल से घर की माप लो, दोनों में से एक मापनी है, या जाते हुए या आते हुए, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। और मान लीजिए बच्चा घर से स्कूल गया है तो इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे, और जहां पर वो पहुंच गया उसको फाइनल पॉइंट बोलते हैं। फाइनल पॉइंट, जहां से चला था वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ओके। अब दूसरी बात, मान लीजिए मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बेटे ये डिस्टेंस कितना है, उसने उसकी लंबाई मापी और मेरे को बता दिया सर ये डिस्टेंस है, मैंने ये पूरा रास्ता मापा है, इसकी वैल्यू डी है। ओके, डिस्टेंस को डी बोल देते हैं हम। फिर मैं उससे बच्चे से पूछा, ओके मेरे को ये बताओ घर से स्कूल तक जाने के लिए आपको टाइम कितना लग गया, घड़ी में देख के बताओ। तो उसने बता दिया सर इतना टाइम ले लिया मैंने, टाइम टेकन इज इक्वल टू टी। ओके, येलो वाले रास्ते से बच्चा स्टार्टिंग पॉइंट से चलते हुए फाइनल पॉइंट तक जब पहुंचता है तो उसको डी डिस्टेंस कवर करने के लिए टी टाइम लग गया। अब मैं उस बच्चे से पूछूं, बेटे आप मेरे को अपने चलने की स्पीड बताओ, तब स्पीड के लिए वो ये फार्मूला लगाएगा, सभी बच्चे लिख लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन, डिवाइड करना होता है टाइम टेकन। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। नोट कर लेना चाहिए सभी बच्चों को। इसलिए एक बच्चा मेरे से पूछेगा सर आपके कहने का मतलब ये हुआ ना कि अगर मैं डी को टी से डिवाइड कर दूं तो स्पीड आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, नोट कर लो। डी को टी से डिवाइड करना है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना है, स्पीड आएगा। एक बात याद रहे, जब भी आपने डिस्टेंस पुट करना है तो मीटर में पुट करना है, मीटर। जब भी टाइम पुट करना है वो सेकंड में पुट करना है, और अगर स्पीड की वैल्यू पुट करनी है तो वो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। नोट कर लो सारे बच्चे, शाबाश। जितने बच्चों को ये समझ आ गया है वो सारे अपने टीचर को जवाब देंगे बाय रेजिंग योर राइट हैंड। हैव यू अंडरस्टूड इट? इफ यस प्लीज रेज योर राइट हैंड। हैव यू अंडरस्टूड इट? लेट मी चेक। प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, फर्मेंट, फर्मेट बेटे, फर्मेट के सेक्शंस के जवाब दें बच्चे। शाबाश शाबाश। ओके, डाउन। कुछ बच्चे लेट ज्वाइनिंग थे, मैं एक बार फिर से बता दूं, जो बच्चे लेट ज्वाइनिंग थे उनके लिए मैंने बताया कि मैं आपको चार चीजें बताऊंगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। तो इन चारों में से अभी मैंने आपको दो समझाए, डिस्टेंस और स्पीड, दो समझाए बेटे अभी। ओके, तो और इनको किस यूनिट में मापते हैं? मीटर में, मीटर का सिंबल एम। डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मापते हैं। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की एक ही यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड। चाहे ऐसे लिख दो मीटर पर सेकंड, चाहे ऐसे लिख, दो तरीकों से लिखा जाता है। फिर लेट कमर्स बच्चे जो है सुन लो एक बार। एक बच्चा अपने घर से चल के स्कूल तक पहुंचा तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? होम। फाइनल पॉइंट कौन सा था? स्कूल। ओके, तो ये बच्चा इस येलो वाले रास्ते से होता हुआ स्कूल पहुंचा। इस येलो वाले रास्ते की जितनी भी लंबाई है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, इसीलिए टीचर ने उसको डी से लिखा, देखो। फिर मैंने बच्चे से पूछा, ओके आपको कितना टाइम लग गया घर से स्कूल जाने में? बच्चा बोलता है सर टी टाइम लग गया, स्मॉल टी। तो अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें तो स्पीड आती है हमारे पास। ओके,
अब यहां इसी फार्मूले की अगर मैं लैंग्वेज वर्डिंग बना के लिख दूं तो वो स्पीड की डेफिनेशन बनेगी। सभी बच्चे लिखें स्पीड की डेफिनेशन। शाबाश। स्पीड इज डिफाइंड एज speed is defined as the rate of change of distance, rate of change of distance। सभी बच्चे याद रखें, जब भी कोई चीज टाइम से डिवाइड होती है तो उसकी डेफिनेशन में रेट वर्ड जरूर आता है। जब भी टाइम से डिवाइड हो, यानी कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करा। स्पीड का मतलब है येलो डिस्टेंस की दूरी कितने टाइम में कवर करी, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करा। ओके। अब जिन बच्चों को समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट हैंड वंस अगेन, रेज योर राइट हैंड। शाबाश शाबाश। हाँ, दो, डाउन डाउन। दो क्लासों के बच्चों ने हाथ नहीं खड़ा करा था, अब उन्होंने भी कर दिया, वेरी गुड, शाबाश। अब इसको भी हम बेटे स्टोर कर लेते हैं। ओके। जो बच्चे लेट ज्वाइनिंग थे मैं उनको बताना चाहूंगा, हमने सबसे पहले ये कन्वर्जन फैक्टर लिखे थे। कन्वर्जन फैक्टर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट, 1 आवर में 3600 सेकेंड, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, 1 मीटर में इतने सेंटीमीटर, 1 मीटर में इतने मिलीमीटर, 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड, 1 माइल में, इसको माइल को हम हिंदी में मील भी बोल देते हैं, मील। 1 माइल में 1.61 किलोमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। शाबाश। आपका जो भी आपको इसमें से नहीं आता था पहले, वो आपको नोट करना चाहिए। जो पहले नहीं आता था वो नोट करना चाहिए और रट्टा लगाना चाहिए। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं अपने बच्चों को अब, योर अटेंशन, मैं अपने बच्चों को अब दो चीजें और समझाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। ओके। तो उसके लिए मैं स्पेस बना रहा हूं बेटे। शाबाश, मैं इतनी स्पेस बना ली, ये मैंने स्पेस बना ली। अब मैं अपने बच्चों को क्या समझाने लगा हूं, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। फिर उसके बाद हम असाइनमेंट करेंगे। शाबाश। देखो, मान लीजिए आपका घर ये है, मान लीजिए ये आपका घर है और आप स्कूल जाना चाहते हो, राइट। और आपका स्कूल है ये आपके स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल होम। तो आपके घर से स्कूल जाने का असली रास्ता ये है। ओके। तो जो असली रास्ता होता है वो डिस्टेंस होता है। अब थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि आपको उड़ना आता है, आपको, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, आपको पक्षी की तरह उड़ना आता है। तब आप घर से स्कूल कैसे आओगे? तो सभी बच्चे कहेंगे सर फिर तो बहुत ही आसान है, हम घर की छत पर पहुंच जाएंगे और वहां पर स्कूल की तरफ उड़ जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में उड़ के पहुंच जाएंगे। ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रेट लाइन पाथ बताया मैंने, कहां से, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, ये जो स्ट्रेट लाइन गैप है हरे रंग वाला, इसको एस से लिखते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को हमने किससे लिखा था बच्चे, डिस्टेंस को हमने पिछले पेज पे डी से लिखा था, डिस्टेंस को डी से लिखा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, याद रखना, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। और जो डिस्टेंस होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, डिस्टेंस टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, डिस्टेंस सीधी लाइन में भी हो सकता है, दोनों चीजों में हो सकता है।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। और एक खास बात, डिस्प्लेसमेंट को आप उल्टा नहीं ले सकते, फाइनल पॉइंट से स्टार्टिंग की तरफ नहीं ले सकते। डिस्प्लेसमेंट को हमेशा स्टार्टिंग से फाइनल की तरफ ही लेना है। जबकि डिस्टेंस को, येलो वाले को, चाहे घर से स्कूल की तरफ माप लो, चाहे स्कूल से घर की तरफ माप, डिस्टेंस को कैसे भी माप सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का नियम है कि वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ ही मापा जाएगा, गारंटी है। अगर उल्टा मापोगे तो वो गलत हो जाएगा। ओके, तो बच्चा कहेगा सर मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग पॉइंट को एच बोल दिया, होम, और फाइनल पॉइंट को स्कूल एस बोल दिया। तो अगर मैं आपको बोल दूं ये स्ट्रेट लाइन गैप एच एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, तो आप इसको सही बोलोगे? मैं कहूंगा बिल्कुल सही बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। लेकिन कोई बच्चा बोले सर अगर मैं बोल दूं एच एस, नहीं एच एस नहीं, उल्टा बोल दूं एस एच, स्कूल से घर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बोल दूं, तो लंबाई तो उतनी ही आएगी सर, लेकिन डायरेक्शन उल्टी होगी। तो क्या आप अब इसको गलत करोगे? बिल्कुल गलत करोगे। फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की तरफ नहीं होता डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल की हमेशा। इनिशियल को स्टार्टिंग भी बोलते हैं। कौन सा वर्ड बोल रहे हैं टीचर बार बार? इनिशियल, INITI। तो लिखो, सभी बच्चे लिखो, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इन ए स्ट्रेट लाइन, displacement is always in a straight line, and displacement is always in a straight line, and it is directed from starting point to final point. It is directed from starting point to final point. अब मान लो, ध्यान से सुनो, जो बच्चा जो जो पक्षी था वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में घर से स्कूल की तरफ उड़ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जो पक्षी स्ट्रेट लाइन में उड़ गया ऐसे, उसने टाइम कितना लिया, टाइम टेकन, मान लीजिए आप कहते हो सर टाइम टेकन ओवर टी, टी टाइम लिया, टी टाइम। मैंने कहा ओके, तो टाइम टी टेकन लिया और डिस्प्लेसमेंट एस लिया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया? अगर उसको आपने टाइम से डिवाइड कर दिया, सभी बच्चे ये फार्मूला लिखें, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टाइम टेकन, इसको बोलते हैं फिर वेलोसिटी। वेलोसिटी, क्योंकि टाइम से डिवाइड करा है इसलिए वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या बनेगा? वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखो बच्चे, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, सभी बच्चे लिख लो, ये फार्मूला भी लिख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, velocity is equal to, या velocity is defined as rate of change of displacement। कितने बच्चों को ये समझ आ गया? रेज योर राइट हैंड, रेज योर राइट हैंड, शाबाश शाबाश। तो अल्टीमेटली बात ये है कि जो असली रास्ता है उसको अगर टाइम से डिवाइड करा येलो वाले को, तब तो स्पीड आएगी। लेकिन ग्रीन लाइन में चाहे असली रास्ता हो चाहे ना हो, बस एक सीधी रेखा खींच दो, कहां से? स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट तक, वो डिस्प्लेसमेंट बनेगी और उसको टाइम से डिवाइड कर दो, वेलोसिटी बनेगी। इस तरह से मैंने अपने बच्चों को ये चारों टर्म्स समझा दी। ओके, अब एक बात और सुनो, शाबाश, ब्रह्मपुत्र के बच्चे नहीं सुन रहे, बाकी बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं।
जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है वही डायरेक्शन वेलोसिटी की भी होती है। लिख लो, वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। velocity is, लिख लो बच्चे, velocity is always directed from Brahmaputra. Why are you looking here and there? Brahmaputra students are not studying. Velocity is directed from starting point to final point. ब्रह्मगुप्ता के बच्चे नहीं पढ़ रहे बच्चे, बाकी सारे बच्चे ध्यान से पढ़ रहे। तो ये भी हम स्टोर कर लेते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि बच्चा मेरे से पूछेगा कि सर आपका कहने का मतलब यह हुआ कि जो आपने ऊपर 4 टर्म्स लिखी हैं उनमें से 2 की डायरेक्शन होती है, 2 की नहीं होती। तो मैं कहूंगा यस। सर किसकी किसकी डायरेक्शन होती है? तो मैं कहूंगा बेटे जिनके ऊपर मैंने डबल टिक कर दिया उनकी डायरेक्शन होती है, जिनमें डबल टिक कर दिया उनकी डायरेक्शन होती है। तो आप कहोगे सर इसका मतलब है डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती? नो। डिस्प्लेसमेंट की होती है? यस। स्पीड की नहीं होती? नहीं होती। वेलोसिटी की होती है? यस होती। लिख लीजिए सभी। सर जिनकी डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की और वेलोसिटी की, क्या ये सेम होती है? यस सेम होती है। सर किधर से किधर को होती है? याद रखना, इनिशियल पॉइंट जहां से मोशन शुरू हुआ, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, फाइनल पॉइंट की तरफ डायरेक्शन होती है। सर किसकी डायरेक्शन होती है? बेटे डिस्प्लेसमेंट की भी यही डायरेक्शन होती है और वेलोसिटी की भी यही होती है। वेलोसिटी की भी दोनों की सेम होती है, नोट कर लो। सर डिस्टेंस की क्या होती है? डिस्टेंस की होती ही नहीं है डायरेक्शन। सर स्पीड की क्या होती है? स्पीड की होती ही नहीं है डायरेक्शन। ओके, तो याद रखना हमेशा ये वाला पेज आपको याद होना चाहिए सारा। ध्यान से देख लो एक बार। अब हम आगे बढ़ते हैं। शाबाश, असाइनमेंट, पुल आउट द असाइनमेंट। अब हम असाइनमेंट करेंगे बेटे। इस असाइनमेंट में मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, बाकी आपने करने। मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी आपको खुद करने हैं। ओके, सबसे पहले मैं अपने बच्चे को करवाने लगा हूं, ध्यान से सुनना। सेकंड क्वेश्चन, मैं सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो करोगे योर सेल्फ आप करोगे। सेकंड क्वेश्चन मैं अपने बच्चों को करवा रहा हूं। देखो, कह रहा है कन्वर्ट 10 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट, सभी बच्चे लिख लें, 10 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटे, अगर आप ध्यान से देख लोगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं। बिल्कुल ध्यान से देखना, पेन छोड़ दो, बिल्कुल पेन छोड़ दो। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया तो बाकी भी करो। सबसे पहले आपको इसमें ये याद होना चाहिए कि 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होते? 1000 मीटर के बराबर। 1 आवर कितने सेकंड के बराबर होता है? 3600 सेकंड के बराबर होता है। ओके, अब ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। अब हमको, मैं आपको
क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ध्यान से सुनो बेटे, जब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, मैं अपने आप को ये मानूंगा मैं 6th क्लास का बच्चा हूं। बिल्कुल धीरे धीरे करूंगा, 6th क्लास के बच्चे की तरह। ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा, मेरे सर कह रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड को इसमें कन्वर्ट करूं, मैं क्या करूं। सबसे पहले मैं, मेरे को याद आएगा कि ये टीचर ने मेरे को एक्चुअल में ये वाली यूनिट स्पीड की थी, तो इसका मतलब ये स्पीड लिख सकता हूं मैं। कोई बच्चा कहते सर वेलोसिटी की भी तो यही यूनिट थी, वेलोसिटी की लिख दो चाहे। तो आपने ये लिख दिया 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद अगला स्टेप ध्यान से देखना, इसको मैंने लिख दिया 10 इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो आप कहोगे सर ये लिखा तो वही है, आपने सिर्फ लिखने का मेथड बदल दी। बिल्कुल सही, लिखी वही चीज है, मैंने मेथड बदल दिया बस लिखने का। सर ऐसा क्यों करा आपने, अभी बताते हैं। अगला स्टेप, 10 को ऐसे ही रख दो। अब यहां पर 1 सेकेंड को भी ऐसे ही रख दो। लेकिन बच्चे 1 मीटर की वैल्यू मैं पुट करूंगा किलोमीटरों में। कैसे पुट करूंगा किलोमीटरों में, ध्यान से सुनना। रफ वर्क, इधर रफ वर्क में देखो, रफ वर्क मेरे टीचर ने मेरे को सिखा रखा है। क्या सिखा रखा है मेरे टीचर ने, कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, वन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो। मैं इसको लिख सकता हूं बेटे, योर अटेंशन, 1000 इंटू 1 मीटर। और मेरे को वहां पर 1 मीटर की वैल्यू पुट करनी है, इसलिए 1 मीटर की वैल्यू निकालूंगा तो 1000 जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा जाके। तो इस 1 को उस 1000 ने डिवाइड कर दिया, ब्रैकेट में डाला, किलोमीटर बन गया। तो ये 1 मीटर की वैल्यू बनी। इस 1 मीटर की वैल्यू को मैं उठा के यहां पुट करूंगा। क्यों पुट करूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं 1 मीटर की वैल्यू पुट करूंगा तो किलोमीटर आ जाएगा। सर उससे क्या हो जाएगा, मेरे को आंसर में किलोमीटर लेकर आना है, इसीलिए मैं किलोमीटर में लेके चला गया। तो बच्चा कहेगा सर इसका मतलब आप यहाँ पर 1/1000 किलोमीटर लिख दोगे। मैं कहूंगा बिल्कुल सही। अगला स्टेप, इस 10 और 1000 का जब मुकाबला हुआ तो ये बन गया 1/100। 1/100 बन गया बच्चे, किलोमीटर यहाँ बच गया, और नीचे बच गया 1 सेकेंड। ये नीचे तो 1 सेकेंड है। आप कहोगे सर अभी भी आपका आंसर नहीं आया, क्योंकि टाइम तो आपको आर में चाहिए, आर में। फिर मैं अपने टीचर की दूसरी बात याद करूंगा, मेरे रफ वर्क में आ जाओ। मेरे टीचर ने सिखाया था 1 आर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। उसको मैं लिख दूंगा 3600 इंटू 1 सेकेंड। फिर मेरे को तो 1 सेकेंड की वैल्यू पुट करनी है, यहां से वहां पुट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस 3600 को नीचे लेकर आऊंगा। Therefore 1/3600 ब्रैकेट में बाहर r इज इक्वल टू 1 सेकेंड की वैल्यू आ गई। इस 1 सेकेंड की वैल्यू को मैं वहां पुट कर दूंगा। तो जब मैं पुट करूंगा तो क्या बनेगा हमारा अगला स्टेप, ध्यान से देखो। मेरा अगला स्टेप बनेगा 1/100 किलोमीटर ऊपर ही चल रहा है, ये वाला डिवाइड हो गया, और नीचे मैं येलो कलर से लिख रहा हूं ये वाला 1/3600 अब क्या करना है, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। जब 3 बार डिवाइड आ जाए, एक डिवाइड, दूसरा डिवाइड और तीसरा डिवाइड, जब 3 बार डिवाइड का निशान आ जाए तो सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर ले जाते होते हैं। तो इसका मतलब बच्चा कहेगा सर 3600 ऊपर चला गया, बिल्कुल। और इस ब्राउन वाले 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये ब्राउन वाला 100 और येलो वाला 1 ये नीचे आ जाते होते हैं 100। तो ब्राउन वाला 100 और येलो वाला 1 ये नीचे आ गया।
अब यहाँ किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। एक बात याद रखना है, जब डिवाइड अपॉन डिवाइड अपॉन डिवाइड हो तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर ऊपर ही बैठ जाता है, और बीच वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन गया, 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखो, आपको क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया है? अगर आपको आ गया है तो आपको राइट हैंड खड़ा कर, शाबाश। अच्छे से देखो एक बार, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में टीचर ने इसका स्टाइल चेंज कर दिया। बाद में 1 मीटर की वैल्यू पुट कर दी किलोमीटरों में, और बाद में सेकंड की वैल्यू आवर में पुट कर दी। और उसको पुट करने के लिए इस बेसिक कन्वर्जन फैक्टर्स का फायदा लिया। लेकिन कैसे फायदा लिया, ये उसका मेथड है। जिन बच्चों को ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड। हरी अप, प्लीज रेज योर राइट हैंड। जिनको समझ आ गया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक इसमें मुश्किल बात थी, क्या थी? ध्यान से सुनो। अगर डिवाइड अपॉन डिवाइड आ जाए, P अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय R अपॉन S, मान लो ऐसे आ जाए बेटे। देखो, एक डिवाइड येलो कलर का, एक डिवाइड ब्राउन कलर का, एक डिवाइड व्हाइट कलर का। अगर इस तरह से 3 डिवाइड आ जाएं तो उसका आंसर क्या होगा? ध्यान से सुनो। जो सबसे नीचे वाला है ना, वो सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होकर बैठ जाता है, P इंटू एस। और जो बीच वाले दोनों होते हैं वो मल्टीप्लाई होकर नीचे बैठ जाएंगे, Q इंटू आर। ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए। छोटे बच्चों को ये आती नहीं है, और टीचर भी बताना भूल जाते हैं। एग्जाम्पल बताऊं? एग्जाम्पल, अगर 7/5 डिवाइडेड बाय 2/9 हो, इधर देखो सभी बच्चे, मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही सेक्शन के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, ब्रह्मगुप्ता। बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे बेटे। पता नहीं ब्रह्मगुप्ता के बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे। जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाएगा, ये 9 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5:2 के साथ मल्टीप्लाई होएगा। इसका मतलब ये 63/10 बनेगा। देख लो बेटे, ये वाली चीज बहुत बच्चे गलत करते हैं। अगर आपने ये अभी नहीं सीखी तो 10th क्लास तक पहुंचते पहुंचते बच्चे मिस्टेक करते रहते हैं इसमें। जिन बच्चों को ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड। प्लीज रेज योर राइट हैंड जिनको ये डिवीजन समझ आ गया। फॉर्मेट, सेंट्रल लाइन, फर्स्ट बेंच, फर्स्ट बेंच सेंट्रल लाइन, फॉर्मेट। कौन सा ये? हाँ, फॉर्मेट। बेटे फर्स्ट बेंच में सेंट्रल लाइन के बच्चे बताओ, आपको समझ आ गया कि नहीं? शाबाश। तो शर्म क्यों करते हो हाथ खड़ा करने? डाउन। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सेकंड क्वेश्चन मैंने करा, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फोर्थ क्वेश्चन मैं करने लगा हूं। चलो फोर्थ क्वेश्चन इंग्लिश का टाइम हो गया, नेक्स्ट टाइम करेंगे। आप इस असाइनमेंट को अच्छे से करके आना, जो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी हम नेक्स्ट लेक्चर में करें। क्लियर है? शाबाश। जिनको आज का लेक्चर समझ आ गया, प्लीज वेव दी हैंड लाइक दिस। जिनको आज का लेक्चर समझ आया, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों के लिए एक एक टॉफी, जल्दी कैच करो, टॉफी आपका प्राइज है ये सारा। गुड। वर्चुअल सब कुछ प्राइज का प्राइज। Okay. Good afternoon, everyone. So you can take your time and 1 minute. You can put your sheets inside. Okay, your science sheets, and you can take out your English, and then your
switch on, switch off mode, science mode switched off, English mode switch on. Okay? That's how we start. So today's exercise is like not very difficult, something very easy breezy. Okay. What you do is, if you all have taken out your English worksheet, then you all have to so today I'll just, like, before I begin the class, I'm going to say that I have a bad throat, and if I cough, bear it with me. Okay, I'm trying to control it. Anyway, here is your this thing. What we do is, we will look at this. Seems very easy. Can someone come to the mic and tell why, when we use a, when we use and when we use the? All the three. When? I'm sure you people have done this in the class and you must know the concept. So I want one. Okay, I can see in Format House there is a child sitting in the middle row, last bench, raising hand. I think so. Yes. So when do we use a? When do we use? Don't say a. It's a. Okay. A when we use and when we use the. Ma'am, we use A for that. Ma'am, and we use for sound like R, E, and the we use a specific word, specific thing or place. Oh, very good. Thank you, Betcha. You are perfectly right. And I'm just going to write like articles. Okay. So this is a. Okay. We don't say a. We don't say a. We will say a. Okay, everyone. Let me. We will not write like Okay. So we will say a here. This one is this consonant sound. Can you see this board? Can you see the color? If not, I'll change it. Okay. So consonant sound. This is an, is, vowel, and the is specific. Okay, the is for specific. Something like, we point out like one thing, specific thing. So this is how the whole thing changes. Now, normally, this is the thing. There are certain times when things change. So we will discuss it a little later. Right now, it looks very easy. So you can start doing the first one. Okay. And it's written, fill in the blanks with appropriate articles and put a cross where not required. Okay, even if there is a blank, but you think the article is not required, you will put a cross there. Okay, so let's start with this. Start with the first one and the second one. Okay, very easy. So basically, you will see consonant sounds, vowel sounds, and specific. Specific noun when you point out. Are you all doing it? If you're doing it, could please raise your hand, because here from the camera, I can feel like many of you are not doing. Very good. Very good. I can see like a lot of children are sitting idle. There is some exchange going on in Euclid's, Euler, Brahmagupta. Very good.
the camera position in some of the rooms is not very good. So I can't see all the children. Have everyone finished the first one? Everyone? Okay. So can we discuss the first one? Okay. I can see in Brahmagupta, middle row, both the girls in blue and yellow in the middle row, they want to answer it. So yes, one of you can answer. One of you, both of you can answer, like it take turns. You will read the paragraph, okay? You will read the paragraph. My mother is an English teacher. My mother is, And yes. Okay, just a minute, English, because vowel sound, so you will write and. An English teacher, very good. I am a student. I am a student. So don't say A here. Okay, A is the letter. You have to say the sound. Okay, so I am a student. Don't say A. Whenever you have to say articles, it's a. Okay, A and the. Okay, so a student. I am a student. Okay, then next you will read out. Why did you come back? You were reading out. Read out the whole paragraph. One. Yes. Both of you can go back and read out the whole paragraph. Yes. I get home from school. Wait, I told you to read the paragraph. Okay. When I get home from school, I watch. What do you do? I watch The programs on TV. the programs. Okay. I watch the program. Now, how many of you agree with this the? How many? See, where do you use the? Because agar koi single, there was one single specified program, it would have been the. Okay. So how many of you have written the? I don't think so. It's right. Okay. I watch programs. I watch programs on TV. There is no need for the. Okay, because the comes under specific. अगर एक कोई program होता था, I watch the, like, whatever, the Master Chef, I watch this on TV, like, something specific. Then programs is general, so you will not write anything. It is like I watch programs on TV. Okay, so there is no need for the. This is not right. Okay, this is not right. It will be a cross here. You will put a cross here because the is not required. Now, I watch programs on TV. That's very good. Cause I can see a hand raised. Yes. On my right, last bench. Yes. Yes, yes. Please, in the middle row, there are two boys who have raised their hands. Two boys or girls, I can't see from here. Okay, you can come. Middle row, third last bench. Aja.
In red. Both the girls are in red, I think so. Yes. I watch. That's the I watch. Yes. So here, I watch programs on TV. यहाँ पे आपका cross आएगा, but the best, that's the best part of the day. That's the okay, the best part of the day, because many of you enjoy, we all wait for our favorite TV programs. Okay, or it's like a welcome relief from that. That's the best part of the day. I watch. I watch the programs. Very good. Now see, यहाँ पे the नहीं आया है, यहाँ पे आ रहा है. The. Have you seen? Because it is specified which programs you are watching. The programs which are for children, specified. I watch the programs that are for, again specified, that are for वो programs कौन से? The programs यहाँ क्यों आया? Because it is specified that I watch the programs which are for children. So for children के आगे भी okay, so there is no need for this. So I watch programs that are for children. I am okay. Gauze, green t-shirt, first middle row, first bench. I am bolo. I am a child. That's so I think they are funny. I am a child, so I think they are funny. Okay, because age specific programs hote hain, and accordingly, like something which you find children find funny, probably adults won't find funny. They'll find it childish. Okay, so age appropriate programs if you watch. So I'll repeat the whole paragraph. Yeah, somebody wants to come and repeat the whole paragraph. Somebody wants to come and repeat? Okay. Gauze house. Middle row, first bench. Yellow t-shirt. Boy. You can come and repeat the whole paragraph with these articles. Okay? With a and the. Okay. Quick. Quick. Yes. You can read the whole paragraph. You read the whole paragraph. My mother is an English teacher. My mother. Yes. Read. My mother is an English teacher. I am a student. When I get home from school, I watch programs on TV. That's the best part of my day. I watch the programs that are for children. I am a child, so I think they are funny. Very good. Okay, so this is how it should be. And now you know why एक ये वाले program के आगे the नहीं था. Okay, and this program there was the. So you can't get confused like that. Okay, and there will be in exam, I think so, your teachers are going to give you this tricky question where you are supposed to understand where to put a cross, like where there is no need for an article. Okay, who will go to the next part now? We'll go to the next part. Next part. Let's go. Who will come back with the next part? The paragraph 2. Kaun karega? Okay, Euclid's middle row, first bench, blue t-shirt. He has raised his hand. And anyone else would like to accompany him from Euclid's? Anyone who would? Okay, from Gauze house, there is a child. There are many children rather.
Okay, amazing. Beta, I can't see you, but you are on my left and I can see your raised hand. I think so you're wearing a green t-shirt. Okay. In gauze. In gauze, a child who's sitting here. So you also come. First, this child from Euclid's will read and then you can read. Okay. So read out. From Euclid's, you can do the first two and first three, and he can do the third and fourth and the fifth. Okay. Should I erase this? I think so. I should erase this. Okay. So let me erase this one. Okay. Chalo. Okay. Start the second one. I am. Start reading. I am. This is the second one. Okay. Second paragraph. I am. Yes, I am. I am. Please, Beta, I can't listen. I can't hear what you're saying. So be more like, I don't know how you have to adjust your mic. Please do. And we don't want to waste your time too. Please start, Beta, from Euclid's, that boy. And then there's another from Gauss. Two boys. Okay, the one from Gauss can start then. I am a little excited because it's a Friday. Because it's a Friday. Because because it is. This it is. Okay, this it is because there is an apostrophe S. We put it is. Can we make it around? So यहाँ पे we will put a cross. Okay. I am a little excited. I'm a little I don't know which class, but there's a lot of noise. Okay. I'm a little excited because it's Friday. It's the Friday? No. It is Friday. This it means it is. This contraction, this apostrophe is because there is a missing word. We always put the apostrophe whenever there is a missing word. Okay. Not word, I'm saying a letter. Okay. So this is a missing letter here. So that is why we call it contraction. So you will just go through it. I'm sure you people know about this. So here, it is Friday. I am a little excited because it is Friday. It's Friday. Okay. Now, next line. There are who will tell me? There are but just so many 200 children are sitting answer. And this is not something like, yeah, very good for methods. I can see lots of that boy in yellow on my right. You have raised your hand. Yes, there's another boy child in yellow sitting at the back. You also come. A girl at the end. Yes, please come. Yes, so I am a little excited because it's Friday. There are A lot of. a lot. There are a lot. Very good. There are a lot of good shows on TV today. This child, I think so, loves TV. Blank one I usually watch is at 3:30. Blank one I usually, you can answer the child who had come. I hope you have not gone back. Blank one I usually watch is at 3:30. Specific. ये specific है. So इसके आगे क्या आएगा? Yeah. It will be the one.
The one, because he's talking about a specific program he watches. Okay, so the one I usually watch is at 3:30. Next, a child who had come from Gauze house only, who was wearing, I think so, who was sitting at the back. You can tell me the. It's about. It's about. What will come here? Who will tell me? I don't know where the child is. Why the child is not. Who will tell me? It's about. Okay. Farmer, last middle row, last girl in red who has raised her hand. Aajao. Aajao, aajao. Informer. Yes, the child who has raised hand. Aajao. Jaldi se aao. It's about. An animal. Hmm? An animal. I am a little excited because it's Friday. There are a lot of good shows on TV today. The one I usually watch is about 3:30. It's about. It's about. यहाँ पे क्या आएगा? Is something specified? No. So it's about animals. It's about animals. Also, I am excited today because my mother is making blank rice for dinner. A rice for dinner, and rice for dinner, the rice for dinner. What will come here? Okay, gauze, red t-shirt on my left, on my right. Yes, please come. Also, I am excited because my mother is making the rice is rice and rice for dinner. The rice. Specification. She यहाँ पे कुछ नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे क्रॉस आएगा because my mother rice general rice पर उसने कुछ specify नहीं किया. Okay, some specific rice. She's making some specific rice. Okay, so here it is only, it will not have any, it will be a crop. Yes. So who will come and read the whole paragraph? Who will come? Who will come and read the whole paragraph? Okay, Brahmagupta Putra, I'm saying. Center row, first bench, yellow t-shirt girl, please come and on. Yes. I am a little excited because it is Friday. There are a lot of good shows on the TV today. The one I usually watch at 3:30. It is about animals. Also, I am excited to be today because my mother is making rice for dinner. Perfect. I hope you all understood. Okay, now third, fourth, fifth, sixth, we will come back and do it, but let us go to the next page first. वो हम आके करेंगे. Let us go because I don't want to miss this with you. Okay, I don't want to miss this. वो तो आपको, like, you all have understood what you're supposed to do. We will finish it, don't worry. Now see, read out the indefinite articles a and. Do you think you understand? Try these indefinite article exercises. So you know what I wrote here? This is consonant sound. And vowel. And so in here, we will only have these two. So you have to pay attention to sound. Okay. Now, helpful hint. As a rule, you can remember that abbreviations. You know what are abbreviations and acronyms? Abbreviations are like, like, who can tell me what is? Yes, Archimedes, very good. I was expecting something like that.
Middle row, that boy in green t-shirt who raised his hand. What is ISRO? I'm sure you all have a lot of interest in this because it is really amazing. Indian Space Research Organization. Very good. Okay. So Indian Space Research Organization. You have सबने सुना होगा NASA. What is it? Okay. ये कहाँ का है नासा नासा सुनते रहते हैं हम हमेशा all the time. Okay, anyone who will come forward with NASA? National Aeronautics and Space Association or something like that. Okay. So this is basically these are abbreviations because pura naam, like if you say NASA, like if you say national, every time you can't say National Aeronautics and Space Association, or every time you can't say Indian Space Research Organization. So you take the first letter of the word and you abbreviate that. These are called abbreviations. What are they called? Abbreviations. Or they can also be like acronyms. Okay, acronyms. This is my C. Acronyms is like fanboys. You all know fanboys. So here F stands for, A stands for as, N stands for nor. Like these are acronyms. So here there is if. Now see ISRO. ISRO. So what will you use before it? Okay, so this is a very helpful hint that all these abbreviations or acronyms that use and start with these letters. ये वाले letters say because the sound changes. Now यहाँ पे you must have noted there are some sounds which are even letters which are consonants also. Okay, A, E, I, O. U तो है ही नहीं इसमें. जबकि U is a vowel sound because U is very amazing. You will be surprised how many different sounds are there. So basically you have to see the sound to denote it with A or an. Blindly dekh ke. Okay. Now university. We never say an university. We never say an university. We say a university. Now, why do we say university? Or if we are talking about a specific, we'll say the university. Okay, because U, iski sound U hai. Okay, university. Okay, so that is why we don't use this an. Okay, because the sound is not a vowel sound. It is a consonant sound, Y sound. So this is why here. Now, so here is a few of them. Let me see which one you can guess right. Guess me, like understand and write it. This is, I have given the pronunciations also. See the pronunciations. Okay. Now you can understand which are sounding like a consonant and which are sounding like what you call like a vowel. And accordingly, you will give A or an. The first one. This is blank home. This is blank home. How does the pronunciation? H. It stands with H. So yes, Brahmagupta, middle row, first bench. Please come. This is yes, this is a home. Because the pronunciation is home. H sound. Next, my brother is blank. Now see the pronunciation. Okay. How do you pronounce this word? It is also H. So you can write my brother is honest. Okay. Who will come? Yes. Brahmagupta, the girl sitting at the end, white t-shirt. Aajo idhar. Yes, please come. And I want people to, yes, I am happy Fermat House is also raising hands. Very good. This is
What? Honest. An. This is an. Because this is silent. Okay, and see the pronunciation. Ah, it starts with a. A is a vowel. Honest. Honest. We don't say honest. We say honest. So it is going to be honest. It is going to be an. Okay. So this is very important for all of you. Now, acronyms and abbreviation. FBI. Full form of FBI will be, now see, if it is FBI agent, F. See the pronunciation. It is E se start ho raha hai. So he is, okay. Who will tell me? Who will tell me? Anyone? Okay, I'm Permouth House. On my right, first row, blue t-shirt. That girl is wearing a blue t-shirt. Aja, please come. He is Paul. Ma'am, Paul is Paul is a FBI agent. he is a FBI agent and FBI agent. Ma'am, He's an because देखो उसकी pronunciation देखो E से शुरू हो रही है F-E a sound. So it is going to be FBI. He is an FBI. Okay. Federal Bureau of Investigation. This is Federal Bureau of, जैसे हमारे यहाँ पे CIB है, Central, okay, CBI, Central Bureau of Investigation. This is the American FBI, Federal Bureau of Investigation. हम Central बोलते हैं and Americans Federal बोलते हैं. Okay, that is the only difference. So is an FBI agent. Okay, because the pronunciation is a. Next. John is blank, unique man. Again, you will see U is a vowel, so don't write an in front of it. Okay? Anyone from Euclids? Any volunteers? The boy sitting on the first bench with red t-shirt, could you come please? Unique. Aja beta, come. Come. Yes, I'm calling you. John is blank, unique man. Ma'am, A. Very good. John is a. Why? अब आप बोलोगे कि ये तो vowel है. इसके आगे क्यों? Because the sound is unique. It starts with the j sound. Okay, this is how you have to understand and identify. And if you think this is very complicated, no. Once you start hearing the letters and their sounds properly, you will never make a mistake. The only thing is that you have to understand that there is a very big difference between listening and hearing. You people are only hearing things, you're not listening. Listening is when you internalize things. When you start grasping the concepts, clarity, then it will never happen. You will never make a mistake. Okay, next. My father has blank PhD. Blank PhD. My father has blank PhD. I'm sure many people must be having doctor fathers. Okay. Sharma, that girl in blue there is a girl in the center row, last red t-shirt. Please come. Sharma. Yes. Girls volunteer more, I've seen. Okay. And I love girls. Yes. My father has, see the pronunciation. My father has a PhD. Because the pronunciation is P. Next, he took blank HIV test. H. How does it sound? H. Anyone from Gauze? Okay, Gauze, I can see a hand raised. Yes, that girl in red t-shirt in the middle row somewhere. Yes. He took. Very good. See how you people are doing so amazing. Okay. And they have one.
Now see A, E, I, O, U. Vowel sound is A, E, I, O, U. So you might get mistaken. कि one लिखा हुआ है. One लिखा है. So probably I have to write इसके आगे and, but no, it is one case because the pronunciation, the sound is different. So you have to, language is all about hearing well. Okay. Listening, not hearing, listening well. When you listen, things change. When you hear and you forget. Okay, who will come forward? Okay, there's someone who's jumping out of the seat. In Brahmgupta, the boy on my right in blue t-shirt. Please, Ajam. It is wa, wa, wa sound. Okay. It is they have a 1 year old boy. They have a 1 year old boy. A 1 year old. I wanted to do this with you because I want to know, okay, how many of you have understood this and things have become much more clearer. Okay, blindly. Very good. I expected a lot of you to raise your hand. I really expected. Now see, one thing I want you all of you to understand is सिर्फ इसको vowels को देख के and नहीं लगाना है. Just अच्छा vowel है and, because ये blindly नहीं, you can't do this blindly. You have to understand the sound. Okay, you understand the sound and then you will put. Now come to the next one. Come to the next one. Fill in with the. You have to fill these things with the where necessary and put a cross. So now you know the is used in place where it is specified. किसी चीज को हम specify कर रहे हैं. So we use the there. Okay, or we are pointing to something like which is unique in the world. The Pacific Ocean, एक ही है पूरे world. The sun, the moon. Okay, so there is just a one in the sun, something very specific. Okay, so here we go. Let's start. Let's start this using the who will come forward with the first one? I am going to either now see, either you are going to write the or you are going to put a cross. Decide. Or you're going, it's either in the blank, it's the or a cross. Not required. Okay. So I'm going to, what will you put? Okay. Sharmat, that girl in blue t-shirt, please come. Aja. Yes. Then I am going to park after school, ma'am. Cross will come, no article. Why? I'm going to park. No, I'm going to the park. I am going to the park. Because basically, you are talking about a particular park. You are talking about a particular, you're not talking in general about parks. You are not talking in general. अगर तुम बोल रहे हो, I'm going to the park, you know where you're going. And the other people know where you are going. Like, I'm going to the park. You're talking about one specific place. अगर आप घर से walk के लिए जा रहे हो, so you are going to some park in the vicinity. Okay? So a known place. We are not talking about in general about a park. If you would have said, I love to go to parks, okay? That would have been like a general statement. Here you are specifying. So I am going to the park. Next one. She is studying. She is studying. Who will come? She is studying. She is studying what? Who will come? Answer this. Okay, committees. The whole class wants to answer. Very good.
You can come with all the answers. Okay, on my right, yes, the child boy who's raising hand, yellow t-shirt. Yes, you can come for this answer, and then the other two girls who are sitting behind him, you can come for the next answer. Okay. She's studying. Ma'am, no article. Very good. Can you tell me why? Because that is more important. Because it is name of a subject. It is name of a whole, like, not agar particular. Yes, it is a name of a subject, but inside biology there are so many specified things. Itna kuch hai. Okay, there are so many, like biology of species, biology of genetics, biology of this, biology of animals, like, so many, like zoology. So many things. So this is like a general. Okay, so you cannot put the here. Next is very good. He's reading a book about who will come answer this? Ma'am, Yes, about the history of Rome. perfect. Because specified about the history of Rome. Specified about the yes. अगर सिर्फ history होता, he's reading about history. Okay, he's reading the history of Rome. Very much specified. क्या पढ़ रहे हैं? The reading history of Rome. Okay, next. I love to listen to. Okay. No article. No article. Very good. You never put before music, dance, you don't put the. Okay. So I love to listen to music. She's going to blank cinema tonight. Okay. Gauze, the child in red t-shirt, come out. Okay. This side I can't see. To my left in Gauze house, I can't see anyone. If you are raising your hands, I'm so sorry. But I can't see anyone there. Yes. She's going to The the cinema. Specified. Because if you tell your mom, I'm going to the cinema tonight, your mom knows where you're going. Or if I say, specified. Okay, specified. So it is the. She's going to the cinema tonight. Next. He's going to walk. Blank dog after dinner. Okay. Brahmagupta. Last row. On my left, there is a girl who raised her hand. Now she has put her hand down. One sitting next to the girl in yellow t-shirt. I think so you're wearing a blue one or purple? No? Nobody? Okay. Who will come forward with this answer? Yes, Archimedes, those children who have raised their hands. I want two of you to come and I want you to answer 1 6, 1 7, and 1 8. Archimedes. Yes. All the children who have raised their hands. There are 3, 4 children. Please come forward. Yes. Ajay. Yes, one child who is in yellow t-shirt. Yes, please come. One will give me answer for 6th, one will give me answer for 7th, and one will give me answer for 8th. By mistake, I've written 9th here. Okay. He is going to walk. He is going to walk the dog. क्योंकि specified dog है. किसी भी dog को उठा के नहीं ले जा रहा. Probably it's his pet dog. Okay. So he's going to walk the dog. Okay. And so I love to eat. I love to eat. No article. Very good. I love to eat. Now you will be surprised that sometimes we do write the forbidden apple. Like, the forbidden apple. This is the apple which Adam and Eve ate. Okay, we sometimes write an apple. So it depends on the context. An apple a day. Eat the doctor. Yes, doctor away.
So, but here it will be no, general. I love apples, or I love to eat apples. Very general, generic. Okay. So you cannot here write anything specific. Okay. But there can be, like, like the forbidden. When we are talking about one apple or that one particular thing, then we can write the next. Next, yes, she's going to. the beach this weekend. Perfect, perfect. Because you know where are you going, or you know where she is going to which beach. So specified. Okay, it's not like okay, any beach. So it's specified. He plays blank football every weekend. He plays blank football every weekend. He plays the football every weekend. He plays. The football. Oh, see, it's general statement. He plays football every weekend. If he was going to play for some team, he plays football for some team's name, or it's a specific game or specific, like then only, because it's a sport. You don't put like this. Okay, so it is he plays football every weekend. She enjoys blank watching cooking shows on weekends. Another general statement. I'm no article. Very good. Note the. She loves to swim blank sea. No article. No. Here, she loves to swim. Okay. Brahmagupta, last bench, there is a girl who's raised her hand. Acha beta. One who's sitting next to the teacher. Yes. She loves to swim. In the sea. The will come. Okay. Because seas are like, very specific. Koi to sea hogi. Like, some sea. It's like name is not mentioned, but here it is seas and all these water bodies which we know are very few in the world. So they are specific. Okay, and probably we know about them from before. So it is not like a general statement. It is like, okay, she likes to swim in the sea or in the ocean. Okay, so this is very specified. So this is how you will do. I think so. The time is up, and here you have 3, 4, 5, 6. Please do it, and we can discuss it in the next class. Okay, 3, 4, 5, 6. You can do it, and we can discuss it in the next class. Okay. I think so. It's time for you to go to the because it's already 2 o'clock. So have a good day. I hope you all enjoyed, and I hope everything is very clear to you. Thank you very much. Thank you.